what is an aging population? And for an 8 marker question, you should be able to discuss the pros and cons of an aging population. तो हमारी नज़र में एजिंग पॉपुलेशन होती है जब एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर you have the average age of the population starts to increase. ये यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत देखा जा रहा है because their birth rate is low, their death rate is low. The medical facilities and all is a lot better, so people are living longer. ठीक है, और क्योंकि बर्थ रेट कम है तो तुम्हारी जो पॉपुलेशन वर्किंग एज में आ रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, और जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं वो ज़्यादा है, तो तुम्हारे पॉपुलेशन पिरामिड में जो अपर टियर है वो बड़ी होती जा रही है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन स्टार्ट्स टू गो अप। वर्किंग एज के ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं वो बढ़ जाते हैं, और एंड स्पेशली इट्स द ओल्डर पीपल। ऑब्वियसली फिर गवर्नमेंट के खर्चे भी बढ़ जाते हैं उन लोगों के ऊपर, बिकॉज दे लिविंग लॉन्गर, तो ज़्यादा लंबी पेंशन्स भी देनी पड़ रही है। उनकी हेल्थ बिल्स भी पे करने पड़ रहे हैं, बिकॉज ओल्डर पीपल टेंड टू गेट सिकर। उनको कैंसर भी होता है, उनको डायबिटीज़ भी होती है, उनको हार्ट अटैक्स भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और खर्चे उस तरफ भी चलना शुरू हो जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज अ हाई बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट वो पैसे कहाँ से लाएगी? हो सकता है वर्किंग एज के ऊपर टैक्सेशन बढ़ा दे। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये जो कोविड है, COVID seems like a devil in disguise for these developed economies, especially United States of America. United States of America was going through a crisis कि उसके लिए मुझे थोड़ी सी तुमको हिस्ट्री समझानी पड़ेगी अबाउट पेंशन्स क्या होती हैं। In the 70s, people were working and industries were flourishing. Manufacturing industries of car हो गया, automation हो गया, product industries हो गया, and people were making decent incomes and all. Government came up with an idea of pensions. Pensions क्या होती हैं कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो हम आपको रिटायरमेंट के पैसे देंगे। So at that time it was a brilliant idea because you had a massive working force, और आप उन मैसिव वर्किंग फोर्स से पेंशन्स के पैसे लेते थे, और वो लोग भी आपको अपनी इनकम का एक परसेंटेज दे देते थे, बिकॉज फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा आपका, दैट वंस यू विल रिटायर यू विल गेट पेंशन्स फॉर एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग टू लिव। नाउ बैक इन द डे people did not used to live that long. I'm in fact talking about US Canada in the 70s 80s, people did not tend to live as long as how they are living longer right now. तो सिचुएशन ये थी कि आप लोगों से पेंशन्स लेते थे ऑन अ मंथली बेसिस ऑफ देयर सैलरी, और फिर आप वो पैसे से खर्चे करते थे, डेवलपमेंट करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते थे, इन्वेस्टमेंट्स करते थे एज गवर्नमेंट, और फिर जब लोग ओल्ड एज पे आते थे तो आप उनको पेंशन्स भी देते थे, लेकिन वो जल्दी मर जाते थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी, तो इट वॉज अ विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट। बट एज द टाइम प्रोग्रेस्ड पीपल स्टार्टेड लिविंग लॉन्गर, एंड अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब जो गवर्नमेंट जो खर्चे कर रही थी, एंड नाउ दैट द पीपल आर लिविंग लॉन्गर, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ रहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ज़िंदा रह रहे हैं और लंबा ज़िंदा रह रहे हैं, आपने उनको इतने ज़्यादा पेंशन के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, और आपके पास पैसे शॉर्ट हो रहे हैं, अब यू डोंट हैव इनफ मनी, तो आप क्या करते हो? आप टैक्सेशन बढ़ाते हो दूसरे एंड पे वर्किंग पॉपुलेशन पे, एंड दैट सॉर्ट ऑफ लाइक इंक्रीजेस द बर्डन। कोविड की वजह से इट जस्ट सीम्स लाइक इट वाज अ वेरी डिजाइंड पॉलिसी कि ओल्डर पॉपुलेशन को वो टारगेट कर रही है, ओल्डर पॉपुलेशन आपकी मर रही हैं, गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है ऑफ पेइंग पेंशन्स टू द पीपल is going to reduce if it continues for a longer period of time. It needs to kill a few millions
in order for government pension pressure to release. So that's sort of like the devil in disguise I was talking about. और प्लस एजिंग पॉपुलेशन जब होती है तो नेचुरली अनफॉर्चुनेटली एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लेबर शॉर्टेजेस होंगी एंड उसकी वजह से वेज इन्फ्लेशन आने के चांसेस हैं. So let me write about what this aging population means. So aging population occurs when the average age in a region or country increases. This will happen if the birth rate is falling along with the death rate. Now, the problems that we will face as a result of this, number one is there's going to be an increase in dependency ratio, which means that there are fewer people working and paying taxes, and they must support more older people who receives state pensions so there will be more burden on government spending on healthcare and pensions. Secondly, higher taxes on those in work, which may discourage them to work harder. So that's a pretty big drawback. At the same time, a shortage of workers, which could push up wages and cause wage inflation. So for an 8 marker, these three problems you would suggest along with the definition of what an aging population is, and then we can suggest some advantage of a country with aging population. So the benefits we could suggest is that
that older population can be an asset. Economic asset, let's say, ताकि we'll see them in terms of value, uh, because of their greater experience and willingness to work hard and take more responsibilities. That could be one of the advantage, the skills, the experience they have. उसके अलावा government can raise the retirement age. Instead of like 65 पे retirement, they can make it go up to 70. इससे फ़ायदा क्या होगा कि it will become illegal to fire older people. I'll say illegal to discriminate against older workers, and this will increase contribution to pensions, right? If एकदम से 5 साल के आपके पास पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ आ जाएगी, तो clearly it's going to be a beneficial thing.